Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 70 for that topic Haloalkanes and Haloarenes. Now we are almost towards the end of this topic. Would like to finish this topic in this chapter in this lecture only. Just we have to learn about the uses and some harmful activities of polyhalogen compounds. Now, what do you mean by polyhalogen compounds? Which contain more than one halogen atom in the molecule. They are known as polyhalogen compounds that we know. So, some of them are mentioned here. One of that is dichloromethane or methylene chloride. The formula is CH2Cl2. It has got 2. Okay. So, dichloromethane or methylene chloride. Then it is said that it is used as a solvent for paint remover. अगर पेंट रिमूव करना है तो then that is used there as a propellant in aerosols. Propellant is just like a catalyst, I will say, which propels the reaction further in making the aerosols are used for different purposes as fumigants and that for that particular process of that activity of killing the insects and all. So they are aerosols, okay. And in that the propellant is there, dichloromethane. Also it is used for metal cleaning and finishing in the metallurgical industries as a solvent. To clean and to finish and to give the polishedness surface there for metal it is used, okay. But still at the same time you should say that it is very harmful. It is harmful there. It harms the central nervous system. And that causes the dizziness and numbness. If that methylene dichloride or methylene chloride is inhaled, it causes the dizziness, यानी चक्कर आ जाएगा, okay. And that can also cause the numbness, यानी sensation lose हो जाएगा, particularly fingers का and toes का. That is called as the loss of sensation. That is called numbness, okay. Then another is that it can causes even burning of the eyes. If eyes will come in direct contact with that methylene dichloride or methylene chloride, then that cornea, which is the uppermost transparent membrane of the eyes, will get burned, and that will cause that particular blindness also. Okay, so that is dangerous. Then another second. So you have to remember this. This may be asked in the form of subjective question of 1 mark each, or that may be asked in the form of MCQ also. Okay. Trichloromethane or chloroform CHCl3, very useful substance there, and its name is very popular. Chloroform, actually nowadays it is used as a solvent for fats, alkaloids, iodine, etc. The best organic solvent. The fats would not dissolve in any other substance, but they will dissolve very easily here. Same is the alkaloid, same is the iodine. So best solvent. Then second thing, it is particularly used nowadays in manufacture of refrigerant Freon R-22. So we shall learn regarding the Freon there, that dichloro, difluoromethane like that. तो ये जो Freon नाम के substances है, they are used in air conditioning and in the refrigeration. So there that is used as a major raw material, okay. And also it was used earlier, I am saying, as a general anesthetic in surgery. Because whenever the vapors of chloroform are inhaled, then they cause a temporary blockage of central nervous system and unconsciousness. So previously, when other anesthesia were not known there, so for surgery purpose they were used. तो पेशेंट को जो भूल देते हैं, that particularly उसलिए इस क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था, पर आजकल उससे भी ज्यादा अच्छे एनेस्थेसिया मिल गए हैं. And that's why that is used rarely nowadays because of its some harmful effects. That also we will explain. Okay. So it is general anesthetic in surgery. Major surgery जो रहती है, हार्ट की रहती है, किडनी की, जिसमें बहुत सारी चीरफाड़ करनी होती है. At that time, the patient should cooperate there, and that's why they are used there. Okay. Then second thing is that its harmful effect is like this: that chronic chloroform exposure causes liver and kidney damage. अगर बार बार क्लोरोफॉर्म वेपर्स को एक्सपोज हो जाते हो तो उससे लीवर और
किडनी का डैमेज हो सकता है, बिकॉज दैट बाय ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूसेस वन ऑफ द गैस विच इज वेरी पॉइजनस, फॉस्जीन. तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया क्लोरोफॉर्म, इन एयर आल्सो द ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, that twice CaCl3 is chloroform plus O2 in presence of sunlight, it oxidizes to form carbonyl chloride COCl2. They call it the phosgene gas, which is highly poisonous. And that's why the care should be taken there while using this chloroform. Generally, chloroform is stored in well stoppered and amber colored bottles. Well stoppered अगर होगा, उसको अच्छी तरह से कॉर्क लगाया है, ढक्कन लगाया है, तो दैट क्लोरोफॉर्म वेपर्स मे नॉट कम आउट और एयर मे नॉट गो आउट. ओके. एंड सेकंड थिंग, इफ एम्बर कलर्ड होगा देन लाइट ट्रांसमिशन विल बी जीरो. सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट क्लोरोफॉर्म विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, अदरवाइज देयर इज अ फियर ऑफ दैट. तो इसी कारण आजकल इसको रिप्लेस किया गया है बाय अदर जनरल एनेस्थेसिया like diethyl ether. Okay, so we shall have to learn some more also, that few more also. Now the third is there, that is triiodomethane or iodoform, that is CHI3. Now this triiodomethane is used, it was used earlier as an antiseptic. Antiseptic हमको मालूम है, whenever there is some wound or injury, then whatever the material is applied at the wound, that is called an antiseptic, because it prevents one of the disease called as the sepsis, जहाँ पे जर्म्स जमा होकर पस फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस अवॉइड करने वाला सब्सटेंस एंटीसेप्टिक. ओके, सो इट वाज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक आयोडोफॉर्म बिकॉज इट लिबरेट्स द आयोडीन. वो आयोडीन लिबरेट करता है इसलिए. एक्चुअली आयोडोफॉर्म हैज नॉट हैविंग दैट प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक. The property was due to iodine which liberates. Okay, but it has got some objectionable smell, disagreeable smell है उसका. So in use it was a problem there. So आजकल वो यूज करते हैं, लेकिन टिंचर आयोडीन ज्यादा यूज किया जाता है, आयोडीन एंड अल्कोहल का मिक्सचर. ओके, रादर देन आयोडोफॉर्म. इट इज यूज फॉर वॉशिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नाउडेज. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऑपरेशन के पहले, सर्जरी के पहले एंटीसेप्टिक करना पड़ता है उसके लिए. देन अनदर इज द टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. ओके, दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स एंड एज सॉल्वेंट. द बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है उसको फॉर डीग्रीजिंग एक्सेट्रा. ग्रीस वगैरह ऐसा मटेरियल अगर निकालना है कहीं पे, ड्राई क्लीनिंग में भी यूज किया जाता था उसका, पर that is having some problem there. Its exposure causes liver cancer. यही प्रॉब्लम, जहां जहां पर क्लोरीन होता है तो ये प्रॉब्लम वहां पे आता है. ये डिजीनेस करता है, डिजीनेस यानी गरगरना. ओके, एंड देन वोमिटिंग, इट कैन कॉज द वोमिटिंग ऑल्सो. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक करेगा, इरिटेशन कर देगा बॉडी को, एंड देन whenever comes in contact with the skin, irritate हो जाएगी स्किन, बर्न हो जाएगी, आईज भी बर्न हो जाएगी. That's why they should be avoided. Okay, it causes irritation and ozone depletion. इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. Now another very important is their freons. Actually what are freons, तो हमें क्या कहना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन are called as freons. क्लोरो, फ्लूरो, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होना चाहिए. कंपाउंड्स, उसको CFC ऐसा शॉर्ट फॉर्म है. क्लोरो फ्लूरो कंपाउंड्स ऑफ दैट मीथेन एंड इथेन आर नोन एज freons commonly. For example, the best freon is there CCl2F2, that is डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन. मीथेन के चारों भी हाइड्रोजन चले गए हैं, 2 क्लोरीन आए हैं, 2 फ्लोरीन आए हैं. So dichloro difluoromethane prepared from CCl4, that is called freon 12 nowadays, by Schwarz reaction. ये Schwarz reaction हमने देखा था, मेटल फ्लोराइड्स के साथ अगर रिएक्शन करते हैं that chloroalkane की, then we get this. Okay, then another is there, it is used on large scale in refrigeration. आजकल रेफ्रिजरेशन का क्या होता है हमको मालूम है, पीछे जो कॉइल्स होते हैं
दे कंटेन दैट पर्टिकुलरली फ्री ऑन ट्रोल गैस. उसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या है? इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. सराउंडिंग से वो हीट एब्सॉर्ब करता है. And that's why in lowering the temperature that will be useful, that activity is called as the refrigeration. So it is used in refrigerators, it is used in the freezers we can say, or that cold storage plants, and also in the air conditioning. आजकल ये इतना बढ़ गया है इसका यूज. 1974 में जब इसका हैवॉक मालूम हो गया था, at that time its production was about 2 billion pounds annually all over the world. आज तो बहुत बढ़ गया है. And that whenever this freon 12 gas escapes in the air, or even this carbon tetrachloride, when it forms the vapors and escapes in the air, it reaches the higher altitude. And higher altitude पे जाने के बाद जो ओजोन का एक लेयर बना है अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव, so that ozone layer is destroyed. The ozone is actually there converted into oxygen, and that particularly ओजोन लेयर विल नॉट बी देयर. ओजोन लेयर कम होना ये हमारे लिए हानिकारक है. क्यों? बिकॉज दैट इज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द अर्थ. या अल्ट्रावायलेट रेज जो सनशाइन के होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं. दे मे कॉज स्किन कैंसर. सो ओजोन डिप्लीशन की वजह से आजकल पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में हमको ज्यादा मिला है, वहां पे ओजोन होल है. So that the skin cancer cases are there more in Australia. तो इसलिए आजकल इसका यूज के लिए बैन भी किया जाता है. पर वो रेफ्रिजरेशन तो नेसेसरी बात हो गई. ओके, तो ये उसका जो है अभी और एक बच गया है, दैट इज द DDT. वो भी हम लर्न करेंगे. नाउ दिस DDT दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. उसमें भी कहा जाता है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये स्ट्रक्चर देखो इसका. ऑफन इट इज आस्क, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, यू नो. यहां पर भी कार्बन ही होता है. ये कार्बन, एंड दिस कार्बन हैज गॉट 3 Cl देयर. ओके, 2 कार्बन है इसलिए वो इथेन का डेरिवेटिव हो गया. द नेम विल बी इथेन. एंड दिस इज ट्राइक्लोरो, सो दिस इज ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज करेक्ट. पर यहां पे 2 हाइड्रोजन जो है दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लोरोफिनाइल ग्रुप्स. सो दैट इज कॉल्ड द डाइक्लोरोफिनाइल. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइक्लोरो डाइफिनाइल. ये 2 फिनाइल रिंग है, ये 2 क्लोरीन है, और वो पैरा डैश पोजीशन को, ये पैरा पोजीशन कहेंगे, इसको पैरा डैश कहेंगे. ओके, सो पैरा डैश डाइफिनाइल trichloroethane is the name of this. So often it is asked. Now this DDT was originally discovered in 1873. It was first prepared, no doubt. But later on, its effective use was started in 1939 only because of the work of Paul Muller. He found that this can kill the insects, and that harmful insect activity that was troubling the human population, no doubt. So many diseases like malaria and that particular cholera etc., which are spread by the insects, even dengue etc. So they were not under control at that time because of that mosquito population. And even in the crops also, that was a lot of destruction of the crop plants because of the insects. So to kill the insects, this insecticide was there discovered by this Paul Muller as effective insecticide, कीटकनाशक, और उसलिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था. But all over the world the use of DDT was increased so enormous that it became out of control later on, and that caused the pollution in air, in water and in soil. It was found that it is very harmful. When it goes in the water, it kills the fish also. वैसे हमारे अगर शरीर में आता है तो हमें भी लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई दैट यूज ऑफ दैट DDT हैज बीन बैन्ड फर्दर वेरी सून इन 1973. सिंस देन इट हैज बीन बैन्ड, और आजकल सभी जगह पर ये बैन किए गए हैं. सम अदर इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन गिवन, पर हमारे सिलेबस में है तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा.
उसका स्ट्रक्चर आ जाता है बार बार लिखने के लिए। सब्जेक्टिव पेपर में आता है, नीट के या जेई के एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ डीडीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डीडीटी. So here my friends, we have finished that topic haloalkanes and haloarenes with all details. 70 lectures right from 1 to 70. Okay. पर ये 1 to 70 lectures है तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऑन एन एवरेज ईच लेक्चर, अभी आज का लेक्चर थोड़ा बढ़ गया है, ऑन एन एवरेज ईच लेक्चर इज अबाउट 12 मिनट्स. सो अगर 12 into 70 करेंगे आप, सो दैट इज 840 मिनट्स. और उसको अगर 60 से डिवाइड कर लेंगे, 60 मिनट का 1 आवर होता है, सो दैट विल बी जस्ट 14 आवर्स आई थिंक. ओके, 14 आवर्स, यानी 14 लेक्चर्स अगर बड़े बड़े मैं लेता हूं तो 14 लेक्चर्स में ही वो हो जाता है. एक एक आवर के अगर लेक्चर लेता हूँ, 14-15 लेक्चर में टॉपिक तो चलता है. बिग टॉपिक इज इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव एनी आर्टिकल देयर, तो जरूर ये लेक्चर्स जो है वो आप जैसे आपको चाहिए वैसे तरह से 1 to 6, 6 to 12 ऐसा करते करते पढ़ो, या 1 to 5, 5 to 10, 6 to 10 लाइक दिस, ऐसा करते करते पढ़ो. सो दैट डेफिनेटली यू विल प्रिपेयर द टॉपिक वेरी नाइसली. पूरा एनसीईआरटी बुक का पार्ट कवर किया गया है. So that will help you in the subjective question paper as well as in the MCQs of NEET and JEE. So I am confident that you will get benefited by all these 70 lectures. From next lecture onward, we shall start the next part. Okay? Till then, take care and do subscribe to my Kate Sir Chemistry channel, Kate Sir Chemistry Shorts channel. Thanks a lot.